V. Gordon Childe, one of the greatest prehistorians of this century, put forth the view that in the post-Pleistocene epoch there was a general process of desiccation, drying up. Due to the desiccation, those zones which had been rich in plant and animals could no longer support hunter gatherers. तो जो लोग रहते थे उन एरियाज़ में उन लोगों ने मूव आउट करना शुरू कर दिया टू द प्लेसेस वेयर सम सोर्स ऑफ वाटर वाज अवेलेबल. और एनिमल्स ने भी अब एनिमल्स भी फोर्स्ड फुली मूव करने लगे टू द एरिया वेयर वाटर वाज अवेलेबल एंड इन सर्च ऑफ फूड. और इसकी वजह से क्लोज रिलेशनशिप बनी ह्यूमंस और एनिमल्स में, और सम ऑफ विच व सब, और इसी की वजह से कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना ह्यूमंस ने शुरू कर दिया. हम यहाँ पर वी गॉर्डन चिल्डे की थ्योरी को पढ़ रहे हैं. स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स लाइक वाइल्ड सीरियल ग्रासेस began to be cultivated to supplement the food supply. This led to agriculture. But after 1950s हमें ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलने लगी अर्ली नियोलिथिक पीरियड के बारे में. तो हमें किसी भी तरह मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता डेसिकेशन का इन एरियाज़ वेयर अर्ली नियोलिथिक कल्चर्स हैड डेवलप्ड. Gordon Childe has referred to the shift to agriculture as the Neolithic Revolution. His concept of Neolithic Revolution was that this was a revolution in the sense that it marked a major qualitative change, not just a quantitative change, and this resulted in the beginning of civilization. Agriculture resulted in the beginning of civilization. Here's another person, Robert Braidwood, found no evidence of desiccation in post-Pleistocene epoch. During the course of his excavation in North Iraq, he therefore ruled out the possibility of drastic environmental changes having led to the origin of agriculture. He refused the desiccation theory of V. Gordon Childe. Braidwood sought to explain the shift to food production in cultural terms. He argued that agricultural development in certain areas were like, he called them nuclear zones, where potential cultivable plants like wild cereal grasses and lentils, and animals which could be domesticated like sheep and goats were available in abundance. People acquired more knowledge of the habitat. They learned to manipulate certain species of animals and plants. This was a cultural process, and it was only a matter of time before the shift to agriculture took place in these nuclear zones. From 1968 onwards, after the work of anthropologists like Richard Lee, that more elaborate theories about the origin of agriculture were put forth. In the new theories, environmental change तो था ही एक factor, but population growth और social consequences of sedentism were also included. लेविस बिनफोर्ड एंड कैंट फ्लैनरी, यहाँ पे हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेविस बिनफोर्ड सजेस्टेड कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर. इन हिज हाइपोथेसिस, and his hypothesis is that the pattern of adaptation would change if the equilibrium between population and environment is disturbed. If the balance between population and environment is disturbed, the pattern of adaptation would change. As long as the balance is maintained, people would continue to pursue the adaptive strategy which they were accustomed to. जब तक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, लोग वही जो पहले से चली आ रही है अडेप्टिव स्ट्रेटजी ऑफ हंटिंग, वो लोग उसी ही फॉलो करेंगे. लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ रहा है पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के बीच में, तो सिंपल सी बात है, लोग सब्सिस्टेंस के लिए दूसरा कोई मीन्स अडेप्टिव स्ट्रेटजी को ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे. द इक्विलिब्रियम वुड बी डिस्टर्ब्ड ईदर ड्यू टू द ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस और ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस. Demographic means we are talking about population here. As there was no evidence of a drastic change in the environment of West Asia at the end of ice ages, Binford has focused on population growth as the main factor responsible for the origin of farming. Sedentism, which is also the meaning is lack of mobility, triggered population growth. As long as as hunter gatherers were constantly on the move, they tried to keep the birth of offspring in check.
ज़्यादा छोटे इन्फेंट्स होंगे तो उनका मूवमेंट को वो हैम्पर करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी देम। लेकिन जब सेडेंटिज्म आया, इट वॉज नॉट नेसेसरी टू हैव अ लॉन्ग गैप बिटवीन बर्थ ऑफ वन चाइल्ड एंड अनदर, thus there was a rapid increase in population during the early post-Pleistocene. Binford differentiates between two types of habitats. He divided and differentiated between two types of habitats, optimal and marginal. The optimal habitats were the main centers of population than others. The optimal habitats were the main centers of population growth. People were settled on that area, optimal region. These had a greater carrying capacity. Carrying capacity means these area had sufficient resources to support a large population for a sustainable time period. This induced people to inhabit the optimal habitats as they were assured of adequate food supply. Then sedentism caused population to grow to a point where it exceeds the carrying capacity of the area. एक हद से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो होने के बाद अब वो एरिया उस पॉपुलेशन को की नीड को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब बैलेंस यानी जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, तो सम ग्रुप्स मूव्ड आउट ऑफ द ऑप्टिमल हैबिटेट टू द नेबरिंग मार्जिनल हैबिटेट्स। मार्जिनल हैबिटेट्स मतलब उसके आसपास के एरियाज़ में मूव करना शुरू कर देता है। बिनफोर्ड ने इन ग्रुप्स को जो ऑप्टिमल हैबिटेट्स को छोड़कर मार्जिनल हैबिटेट्स में जाते हैं उनको डॉटर ग्रुप्स कहा है। दीज वर एरियाज विच वर लोकेटेड एट द मार्जिनस ऑफ द ऑप्टिमल हैबिटेट्स, मतलब एकदम बाहर के इलाकों में रहते थे ये एरियाज थे मार्जिनल हैबिटेट्स, जो कि ऑप्टिमल हैबिटेट्स के बाहर के इलाके होते थे। द मार्जिनल हैबिटेट्स डिड नॉट हैव अ वेरी हाई कैरिंग कैपेसिटी. Their resources were not adequate for supporting a large population. Consequently, जो communities थी which inhabited those areas, those marginal habitats, they have to be more mobile lifestyle. They continued with a more mobile lifestyle. They have to keep on moving from one place to another for their survival. In the absence of sedentism, population growth was kept in check and equilibrium was maintained in marginal habitats. Population growth in the optimal habitats created problem for the marginal habitats. ऑप्टिमल हैबिटेट्स में क्या था कि जो सेंटर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था उसकी वजह से पॉपुलेशन ऑप्टिमल हैबिटेट्स में ग्रो हो रही थी और ग्रुप्स बार बार मार्जिनल एरियाज़ में आ रहे थे। इसकी वजह से जो बैलेंस था मार्जिनल एरिया का वो और ज़्यादा अपसेट होने लग गया। जो प्रेशर फेल्ट था, मतलब जो प्रेशर मार्जिनल एरियाज़ के हैबिटेट के लोगों ने जब फील किया तो उन्होंने वो फोर्सफुली उन्होंने एक न्यू वे टू सबसिस्ट, न्यू वे टू सर्वाइव, अडेप्ट करने की कोशिश की, न्यू वे टू सबसिस्ट करने की कोशिश की, ढूंढना, कुछ नया वे ढूंढने की कोशिश की। इट वॉज दिस सिचुएशन दैट लेड टू द शिफ्ट टू एग्रीकल्चर in the marginal zones rather than in the optimal habitats. Though Binford regards population growth as a prime mover of change, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं किया है, उन्होंने पॉपुलेशन के साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी ऐड ऑन किया है। ही हैज़ सजेस्टेड कि जो पोस्ट प्लिस्टोसीन के बाद जो सी लेवल में राइज हुआ, वो टेम्परेचर वार्म हो रहा था, इसकी वजह से कोस्टल हैबिटेट भी इवॉल्व हुई, which created a favorable coastal habitat for sedentary populations. Fish and wide variety of marine animals were included in the diet who were living in the coastal habitat actually. During the late 1960s, Kent Flannery put forth the view that there were other ways in which equilibrium could have been disturbed. He stated that the shift to agriculture did not denote a drastic change. Hunter-gatherers, those who were living in marginal areas of West Asia, began paying more attention to certain type of plants. It was found that these were species whose yield could be increased considerably. So, Kent Flannery का व्यू ये था कि हंटर गैदरर्स जो कि मार्जिनल एरियाज़ में रहते वेस्ट एशिया के, वो ज़्यादा अटेंशन पे करने लग गए कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स को, जिससे उन्हें लगा कि ये ज़्यादा ज़्यादा यील्ड कर सकते हैं कंसिडरेबल अमाउंट में। फ्लैनरी ने सजेस्ट किया कि
there might have been accidental changes or mutation in some of the species which were collected in the wild form. In the case of West Asia, wheat and barley became the favored plant. ज़्यादा उसे ग्रो किया जाने लगा, फेवर्ड में रखा गया, बाकी सारी अलग वाइल्ड प्लांट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, इसलिए वीट और बार्ले ज़्यादा ग्रो करने लगे। फ्लेनरी की जो थ्योरी थी वो was based on the evidence of the origins of agriculture in the American continent in Mesoamerica. Early agriculture was based on maize cultivation. Earlier we have studied that Aztec people used to live in Mesoamerica and all. So यहाँ पे ये लोग मेज़ कल्टीवेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो फ्लेनरी की जो थ्योरी थी वो इस एविडेंस पर बेस्ड थी। According to Flannery, these developments were preceded by a shift from a narrow spectrum to a broad spectrum economy. A broad spectrum is one in which a wide range of animals and plants procured in diverse ways are included in a diet. एक wide diversified diet होना. This broad spectrum revolution, as Flannery calls it, took place in marginal areas like West Asia. In marginal areas, it was necessary to tap all possible sources of nutrition because they were always on move actually. The people living in these habitats were open to experimentation. They were doing experimentation, they were trying different ways, different plants and all. Mark Cohen's theory. He restated the case for population being the major factor underlying the origin of agriculture. His argument is somewhat different from that of Binford's. कोहेन की थ्योरी में कोहेन का मानना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कोई एक सडन चेंज नहीं था, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी. देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पैलेलिथिक एज. पैलेलिथिक एज से ही पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी. ये सिर्फ 100 साल के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं किया, ये बहुत लंबे टाइम से पॉपुलेशन ग्रोथ करती चली जा रही थी और लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी. एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, human began occupying all those areas which could sustain the hunting and food gathering economy. They were occupying all those areas. Once it became increasingly difficult, अब एक पॉइंट के बाद पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो लोग और दूसरे एरियाज पे एक्सेस नहीं था उनके पास. It became increasingly difficult to have access to such areas. It became necessary to experiment with new ways of procuring food. Agriculture was a response to population pressure. मार्क कोहन कहते हैं कि agriculture was a response to population pressure. Cohen points out that the advantage of agriculture is that it allows greater density of population, and hunting do not allow greater density of population. People were always moving and all, that's why. Barbara Bender, she has been very critical of the theories which center around population growth. She argued that increase in population cannot by itself be regarded as a prime mover. Population growth is linked with a number of factors. The manner in which a society, the factors are as follows. The manner in which a society is organized, its subsistence pattern, the level of technology they had access to, integration with the environment, and what were their world views. We should therefore start by looking at the social relation as a whole, rather than isolating population or environment as cause of change. Adapt to strategy change when because social relations change. It was the theory put forward by Barbara Bender. Domestication of animals. Some animals were reared for their produce, like दूध के लिए, milk, eggs, wool and meat. Animals were selectively bred so they could provide surplus milk and eggs. In the case of sheep, human intervention की वजह से sheep के body पर wool grow करने लगा था, वरना उनके जो wild ancestors थे sheep के उन पे wool grow नहीं करता था.
For animals which were reared for meat, these were not killed immediately but allowed to grow to a particular age. एक लंबी समय के बाद, एक एज पे आने के बाद ही उन्हें मारा जाता था ताकि वो उसके मीट को यूज़ कर सके खाने के लिए. Domestication of animals meant that they were made to shed their wild characteristics like reduction of their horn size, teeth, because they were not using those things. The first stage was a period of loose interaction between humans and those animals which could be tamed easily. This was followed by a period of rigid captivity of chosen species. The animals were not allowed to interbreed with the wild types and remained in close contact with humans once they had shed their wild traits. एक बार उनके वाइल्ड ट्रेड शेड हो जाते थे, उसके बाद उनको क्रॉस ब्रेड किया जाता था, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता था ताकि उनके कुछ सर्टेन फीचर्स को इम्प्रूव किया जा सके. द ऑब्जेक्टिव हमेशा से वो यही था कि इन्हेंस किया जा सके उनके मिल्क के यील्ड को, एग्स को, एग के यील्ड को, वुल को और मीट को, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट फॉर विच अ स्पीशीज़ हैव बीन डोमेस्टिकेटेड. जो डॉग था वो पहला ऐसा एनिमल था जिसे डोमेस्टिकेट किया गया था. डोमेस्टिकेटेड डॉग्स अपर पैलेलिथिक ह्यूमंस को हंटिंग के टाइम पे हेल्प करते थे. रेनडियर्स वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड. दीज would be released among wild reindeers to distract them to facilitate hunting of the wild reindeer. यंगर एनिमल्स और फीमेल्स को नहीं मारा जाता था बट उनको अलाउ किया जाता था, मतलब ग्रो करने के लिए यंगर एनिमल्स को ग्रो करने दिया जाता था और फीमेल्स को रिप्रोड्यूस करने दिया जाता था. बाय स्पेयरिंग यंग शीप एंड गोट्स द फूड सप्लाई वाज मेड मोर स्टेबल. सेडेंटिज्म एंड अर्ली नियोलिथिक सोसाइटी. It is a term applied to the transition from nomadic lifestyle to a society which remains in one place permanently. Sedentism helped with the process of food production by bringing several groups in close contact with each other on a semi-permanent or permanent basis and promoting cooperation among the group, thereby in reinforcing food productions. As people started settling down on a semi-permanent basis in the post-Pleistocene, that they developed mechanism for solving conflicts. अब जब लोग सेमी परमानेंट बेसिस पे रहने लगे तो उन लोगों को एक ज़रूरत पड़ी एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करने की जिससे कि वो लोग अपने आपस के कन्फ्लिक्ट्स को सुलझा सके. तो दिस गेव राइज टू द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी. उनमें कोई एक ऐसा होता था मुखिया जिसके पास पावर होती थी, जिसके पास अथॉरिटी होती थी, as well as rules for social interaction. There were many rules for social interaction as well as society was growing. Here in this picture we can see humans exercising sedentism. The authority was linked to the performance of ritual and would have not have meant much in terms of access to food, but it would have provided an opportunity to have access to objects like ornaments or some articles connected to ritual. A great deal of exchange होता था अलग अलग क्लैंस के बीच में. क्लैंस जो कि एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हुआ करती थी और उनके जो मेंबर्स हुआ करते थे वो रिश्ते में, मतलब हु हैड किनशिप टाइज, वो सब रिश्ते में जुड़े रहते थे. कोई ना कुछ रिश्ता होता था उनका आपस में, जैसे कि वो लोग ब्लड रिलेटेड है या फिर उनका एक कॉमन एंसेस्ट्री है. रिलेशंस वर मोर स्ट्रिक्टली डिफाइंड एंड रूल्स ऑफ मीटिंग या फिर मैरिज वर स्पेसिफाइड. जो क्लैन था वो एक एक्सोगेमस यूनिट में इवॉल्व होता है. एक्सोगेमस यानी कि उन लोगों को अपने क्लैन के बाहर ही शादी करनी है या फिर मीटिंग करनी है. गिफ्ट्स वर गिवन टू एंड रिसीव्ड फ्रॉम ग्रुप्स with which cooperation was desired. Apart from objects, the exchange of marriage partners were given, like they were gifted by exogamous clan to other exogamous clan. Religious belief and rituals too became more elaborate. In many of the early Neolithic settlements, clay and plaster figures have been found. A large number of these figures depict women. At times, pregnant women are also shown. जो फिगर्स है वुमेन की जो कि रिचुअल से कनेक्टेड होती है और
उनको मतलब दिखाने का, उनका फिगर्स का मतलब ही यही है कि वो फर्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए बताया गया है ऑफ वुमेन और एज वेल एज द सॉइल दीज डेवलप्ड इनटू मदर गॉडेसेस कल्ट्स। यहाँ पे फीमेल को एज अ गॉडेसेस, मदर गॉडेसेस के रूप में देखा जाने लगा और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं। सिमिलरली बुल कल्ट्स भी हुए और सिमिलरली स्कल कल्ट्स भी हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और अगर आपको नोट्स या फिर पीपीटी चाहिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।